A very good morning to all students. Live class for class 10 science, chapter 1 chemical reactions and equations. This is the part 2 of this chapter. This is the second class for this chapter. Previously, we have studied many concepts in this chapter, like what is a chemical reaction, how to balance a chemical reaction, types of chemical reactions, okay, examples of chemical reactions. We have studied all these things. Today, we are going to go ahead. So, all of you very well understand how to balance a chemical reaction. Okay, we will do some practice exercise of that after some time. Before that, let's go through those types of combination reactions once again. So जो भी आपने chemical reactions पढ़ी अभी, types of chemical reactions, combination, displacement, double displacement, decomposition, ठीक है? First of all, to revise that, please write 5 reactions in your notebook. जो भी आपकी notebook आपके पास है, पेन और नोटबुक जो आपके पास है, उससे आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के एक एग्जांपल आप लिखेंगे. 5 रिएक्शंस प्लीज राइट डाउन. और किसी रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स. 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में 5 रिएक्शंस लिखिए. कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स. ठीक है, आप लिखिए, सिंसियरिटी से लिखिए अपनी 5 रिएक्शंस. और किसी में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप. ठीक है, सो आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन लिखी थी? आपने मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पढ़ा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, एक और रिएक्शन आपने पढ़ी थी क्विकलाइन. क्विकलाइन प्लस वाटर. व्हाट इज द फार्मूला फॉर क्विकलाइन? क्विकलाइन का क्या फार्मूला होता है वो लिखिए. क्विकलाइन प्लस वाटर मेक्स स्लेक्ट. So that is a type of combination reaction. Okay, another combination reaction. कोई और combination reaction आप लिखना चाहें तो क्या लिखो? For example, water formation of water. Combination में लिखना formation of water. ठीक है, is it a combination reaction? क्या ये reaction combination reaction है? Yes or no? Because in combination reaction, 2 or more reactants combine to form one single product. So this is one single product. So this is a chemical reaction. Okay. Now you have to balance this reaction. इस reaction को balance करो, कैसे करोगे? See, H2, H2, O2, O1. उधर O1 है, तो आपको इधर भी 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 2. That's how you balance this reaction. So this is another combination reaction. ठीक है? So you can write many combination reaction in this way. कैल्शियम ऑक्साइड वाली आपको आती है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 makes calcium hydroxide. This is quicklime and that is slackline. ठीक है, is this reaction balanced? Yes, this is already balanced. ठीक है, और भी कोई काफी रिएक्शंस आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में. देखिए ये वाली जो रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड वाली, कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है क्विकलाइम होता है, जिससे हम we use quicklime in whitewashing our homes, our walls of the homes. घर में जो हम white wash कराते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड से. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये रिएक्शन यहाँ तक आपको आती है. इसके बाद देखिए, when this calcium hydroxide is applied on the walls, जब walls में हम इसको अप्लाई करते हैं ब्रश से, तो क्या होता है? this calcium hydroxide जो आपका बना है calcium hydroxide, this reacts with air. क्योंकि जो वॉल्स पर पेंट है आपका, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पेंट बनाया है आपने, that reacts with gases in air. कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड. this slaked lime या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर lime water, this is also called lime water. lime water reacts with carbon dioxide present in air to form, क्या बनेगा आप सोचिए? कैल्शियम कार्बोनेट. Okay, you can see there is another concept. This is a base. Let's move on to acid base concept for 1 minute. This is base
and this is non-metal oxide. Non-metal oxide. Non-metal oxide are acidic in nature. So this is acidic, this is base. So it makes a salt, which is calcium carbonate. Okay, acid plus base makes salt, calcium carbonate. बाकी क्या बचा हुआ है? कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट एक को इधर से लिया, बचा क्या? वाटर. ठीक है. तो जो व्हाइट वॉश करने के बाद आपकी वॉल्स पर जो शाइन आती है वो किससे आती है? कैल्शियम कार्बोनेट से. ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वॉल्स को शाइनी लुक देता है. ऑलराइट, these two reactions are very important. One reaction इसका फंक्शन क्या हुआ व्हाइट वॉशिंग में. सेकंड फंक्शन इसका है डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आपने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा था चैप्टर 2 में कि हाउ डू वी डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को आप कैसे डिटेक्ट करते हो? उसका आंसर ये था कि वी पास कार्बन डाइऑक्साइड to the slaked line and then milkiness appears, and that milkiness, that white जो appearance होती है, that is due to calcium carbonate. ठीक है. So this reaction can be used to detect the presence of carbon dioxide in any experiment released. So calcium hydroxide when reacts with carbon dioxide, it gives a milky appearance to the solution, and that is due to calcium carbonate. All right. This reaction is already balanced. Both of these reactions are balanced. Now we will study another type of reaction, which is exothermic and endothermic reaction. So what is an exothermic reaction? Exothermic reaction क्या होता है? Exo का मतलब होता है बाहर, thermic का मतलब होता है temperature, heat. So when heat is released outside, that is exothermic. Endo का मतलब होता है inside. So when heat is taken inside, that is endothermic. ठीक है. Exothermic and endothermic. Exothermic and endothermic. Exothermic and endothermic. So the reaction in which heat is released, that is exothermic, and the reaction in which heat is taken from the surroundings, that is endothermic. So you studied in 9th class that evaporation is an endothermic reaction. क्योंकि जब भी evaporation होता है, in that process heat is taken from the surroundings. That's why evaporation causes cooling. आप नहीं पढ़ा है तो endothermic, exothermic. So do you know some examples of exothermic? Some processes, reactions बाद में लिखेंगे. Tell me some examples of processes of exothermic. ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है? याद करो, हमने किस में पढ़ा है? कौन सी रिएक्शन में release of energy by breakdown of glucose? So which reaction is that? That is cellular respiration. आपने respiration की reaction याद है आपको? Breakdown of glucose in presence of oxygen. All right, to release high amount of energy in form of heat. So heat जो है that is also energy. So exothermic में अगर heat release हो रही है या energy release हो रही है, that is the same thing. Okay, so write down reaction for cellular respiration. Carbon dioxide plus water. Am I writing this right? What will be the products in this reaction? This reaction is this. This reaction is photosynthesis. So photosynthesis में तो heat हम energy is taken, so that is endothermic. हम पढ़ेंगे respiration, that is breakdown of glucose. What is glucose? This is glucose. Okay. Cellular respiration, glucose plus water, sorry, oxygen. What will be the products? Carbon dioxide plus water plus energy. Yeah, heat. So this is a type of exothermic reaction. Now balance this reaction. इस reaction को balance करो. I am writing A, B, C, D. Tell me the values of A, B, C, D. Values of A, you can see. C6 on left hand side, number of C atoms are 6. So we have to write here 6. 6 CO2. Alright. Now H is 12. Here is 2.
So we have to multiply that by 6H2. All right. Now oxygen. How many oxygen are here? 6 here, 2, 8, and उधर कितने? There are more. There are 6 plus 12 plus 6, 18. उधर 18 है, इधर 6. All right. हमें ऑक्सीजन इधर 6 है, उधर ऑक्सीजन 18 है. हमें इधर कितने ऑक्सीजन चाहिए? 12. ठीक है. अब 12 ऑक्सीजन कहां से आएंगे? देखिए, वी शुडंट इंटरफेयर विद दिस, क्योंकि अगर हमने इसको छेड़ा तो देन ऑल ऑफ दैट विल बी इंटरप्टेड. सो वी विल चेंज हियर. यहां पर क्या चेंज करेंगे? हाउ हियर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 2. हाउ टू मेक दिस 12? बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय 6. 6O2. That's how we balance this reaction. 6O2. So this is a balanced chemical reaction for cellular respiration, and this reaction is exothermic reaction. If you have any doubt, you can write in the comment box. This is an example of exothermic reaction. Any other reaction which you know in which heat is released? Any reaction in which heat is released? Very simple reaction. See, carbon plus oxygen. When carbon is oxidized or burnt, देखिए, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है कंबशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड कंबशन? ऑक्सीडेशन इज सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि आपने फॉर्मेशन ऑफ वाटर में पढ़ा था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मेक्स वाटर. ठीक है, दैट इज सिंपली ऑक्सीडेशन. बट इफ बिसाइड्स ऑक्सीडेशन heat is also getting released, so heat or light is getting released, then that becomes combustion reaction. So this reaction is a type of, देखिए, carbon plus oxygen, carbon plus oxygen, CO2 plus heat. ठीक है. This reaction is also an exothermic reaction. This is the basic reaction. जब भी किसी कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं तो हीट रिलीज होती है. ठीक है, दैट इज अ कंबशन रिएक्शन. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट डाउन. बेटर एग्जांपल इज एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसमें कार्बन का कंपाउंड होता है. दिस इज CH4. दिस इज नोन एज मीथेन. व्हाट इज दिस? मीथेन. CH4. मीथेन इज अ गैस. आपने सुना होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG. जो CNG गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? ये गैस होती है मीथेन. CNG गैस, compressed natural gas, मीथेन. मीथेन प्लस ऑक्सीजन. जब हम मीथेन को बर्न करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, उसी से जो है व्हीकल्स जो है वो चल पाते हैं. ठीक है, जो जिन भी व्हीकल्स में मीथेन यूज हो रही है तो वो कैसे यूज हो रही है? दैट रिलीजेस एनर्जी. तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. ठीक है, इसमें एनर्जी भी रिलीज्ड होगी. सो बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कैन यू बैलेंस दिस रिएक्शन? H4, there are H2, 2H2. That's all. Okay, 2H2. Is this reaction balanced? You have to write 2 here. Okay, balance this reaction again. Balance this reaction. CH4 plus O2, CO2 plus H2O plus energy. Balance this reaction. This reaction is exothermic. CH4 plus O2. Here oxygen is 1 on H2O. Okay. H is 4, there H is 2. So you multiply H2O by 2. Now oxygen becomes 4, so here also 2. That's how we balance this reaction. So these are examples of exothermic reaction. Okay, you can write them down. Write 2H2, CH4 plus 2O2, CO2 plus 2H2O plus energy. So I hope you have written this down. All this is an NCERT. You can revise that from. Now we will go on to endothermic. Endothermic reaction. एंडोथर्मिक का एग्जांपल आप देखिए कोई.
endothermic reaction. What is an endothermic reaction? In which heat is taken from outside. Any example of endothermic? Evaporation. Second, anything else? इसमें heat surrounding से लेते हैं हम. Photosynthesis, right? Photosynthesis में क्या करते हैं? We take solar energy from surroundings. That is also endothermic reaction. Photosynthesis is endothermic because energy is taken, and respiration is exothermic because energy is released. So you can write photosynthesis reaction here. Another reaction is reaction between barium hydroxide and ammonium chloride. Barium hydroxide, barium Ba, barium is an element, hydroxide ions plus ammonium chloride. See, when you react these two chemicals in a test tube or in a vessel, that vessel becomes cold. जब जिस भी वेसल में आप ये रिएक्शन करा रहे हैं वो वेसल कोल्ड हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि whenever there is endothermic reaction, it cooling occurs. Evaporation में भी यही था. Evaporation में भी cooling occurs due to endothermic reaction. Heat is taken from outside. Similarly, this reaction takes heat from the vessel. That's why vessel becomes cool. So, what will be the products? Barium chloride plus NH3 ammonia plus H2. Okay, this is an example of endothermic reaction. Barium hydroxide plus ammonium chloride. Okay, makes barium chloride plus ammonia plus water. And this reaction you observe. क्या ऑब्जर्व करते हो आप, क्या फील करते हो? दैट द वेसल बिकम्स कूल. वेसल बिकम्स कूल. Vessel becomes cool. All right, because this is an endothermic reaction. Note it down. Okay, this reaction is important. I told you that read every line of NCERT. NCERT में जो भी एक लाइन दी हुई है उसे पढ़ो, और जो आपके पैराग्राफ दिए हुए हैं NCERT बुक में आपको कुछ कलर में पैराग्राफ दिए, कलर्ड पैराग्राफ, जैसे कोई येलो पैराग्राफ है, कोई ग्रीन पैराग्राफ जो अलग से दिया हुआ होता है, उसको जरूर पढ़ लेना. उसमें से काफी अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है. Okay, exothermic, endothermic we have studied. So decomposition reaction. तो decomposition reaction में आपने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? You studied two reactions. Decomposition में आपने two reactions पढ़ी थी, वो आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, राइट दैट डाउन. जो लास्ट क्लास में दो रिएक्शंस हुई थी उनको लिखिए. Decomposition reaction, decomposition of ferrous sulfate and decomposition of lead nitrate. फेरस सल्फेट और lead nitrate की रिएक्शंस पढ़ी थी लास्ट क्लास में. मैंने बोला था रिवाइज भी कर लेना, उसको लिखो अभी. So you have written any doubt in those reactions? So उसके अलावा भी हम decomposition reactions कुछ और पढ़ेंगे. आपने पढ़ा decomposition by heat. जब आपने ferrous sulfate को हीट किया था, that occurs by heat. Triangle is sign of heat. So what was the product? Fe2O3, ferric oxide plus SO2 plus SO3. In this reaction, you studied by heat.
So are there any other methods by which decomposition can occur? क्या कोई और तरीका है except heat जिससे हम डिकम्पोज करा सकते हैं? Yes, there are heat. Besides heat, we can also decompose by light and electricity. Sorry, sunlight and electricity. By sunlight or electricity, we can decompose any compound. So by heat की रिएक्शन मैं लिख देता हूँ एक लेड नाइट्रेट वाली लिखते हैं. लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2. ये रिएक्शन होती है, बैलेंस आप कर लेंगे. ठीक है, बैलेंस कैसे होती है रिएक्शन? नाइट्रोजन 2 है ना, तो हमें उधर 2 लगाना होगा. ठीक है, वैसे ही है. और फिर ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं उधर, क्योंकि ऑक्सीजन और नंबर में है उधर, तो हमें यहाँ भी 2 लगाना होगा और फिर इधर भी 2 लगाना होगा. और देन ऑक्सीजन बिकम्स मोर. ये रिएक्शन आप लास्ट क्लास में बैलेंस कर चुके हो, आपको आनी चाहिए. प्लस 4NO2. दिस इज बाय हीट, बाय लाइट, बाय सनलाइट. देखिए कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, देयर आर सम कंपाउंड्स व्हिच डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब सनलाइट उन पर पड़ती है देन दे डिकम्पोज. कौन से कंपाउंड होते हैं? वो होते हैं सिल्वर हैलाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड. Ag, capital A small g, that is the symbol of silver. Silver chloride, silver bromide. Sunlight. When you put them on in sunlight, then this compound breaks into silver and chlorine. Silver is silver plus chlorine gas. Chlorine gas का formula क्या होता है? Cl2. Okay, because there are 2 chlorine atoms, so we have to put here 2. Now Ag also becomes 2, so we have to put here 2. That's how we balance this reaction. Similarly, you can write this reaction silver bromide. Silver bromide. Okay, look, both of these reactions are similar. One is by heat, another is by sunlight. Okay, look at these reactions carefully. Any doubt, please ask. Yes, compound is silver chloride. Silver chloride or silver bromide, silver plus chlorine or silver plus bromine. This reaction, जो आपने सनलाइट वाली रिएक्शन अभी पढ़ी है, what is its significance? इसका क्या यूज है किसी डेली लाइफ के काम में? क्या यूज है इसका सिल्वर क्लोराइड का? This reaction is used in photography. What is photography? How does it get used in photography? देखिए जो फोटोग्राफी में इधर देखिए ये जो सिल्वर बन रहा है, सिल्वर गिव्स शाइनी अपीयरेंस. जो सिल्वर की जो लेयर बन रही है दैट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें दिस रिएक्शन इज यूज्ड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर. ठीक है, सिल्वर के फॉर्म होने की वजह से दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. By heat, by sunlight. There is another method by which we can decompose, that is by electricity. Electricity से हम क्या decompose करा सकते हैं? Electricity का chemistry में कहाँ use है? Electricity का chemistry में use है electrochemistry में. Electrochemistry में हम क्या करते हैं? We use electrolyte. Okay, कोई electrolyte लेते हैं, solution लेते हैं acid, base या salt का. When electricity is passed through that electrolyte, the compound decomposes. For example, we take solution of water. Okay, we take simple solution of water with some impurities added in it. When we pass electricity through water solution, water breaks down into hydrogen and oxygen. So that is an example of decomposition by electricity. Okay, please write this down. By electricity. Third point is by electricity.
What is the reaction? Water. When we pass electricity through water solution, it breaks down into hydrogen gas and oxygen gas. Balance this reaction. H2H2 O1 O2 2 and here 2. यहाँ पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? So this is an example of decomposition by electricity. All right. Now, what is actually happening in this electricity reaction, this decomposition reaction में actually हो क्या रहा है वो हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में. उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर बुक में दिया हुआ है उससे पढ़ लेना, नोट्स में है आपके. So we are going to study in detail the decomposition by electricity. So what happens in electrochemistry? Yeah, use of electricity in chemistry. So we generally take any vessel. ये कोई vessel है आपका, कोई भी लैब का आपका apparatus है जिसमें आपने कोई solution लेना है. कौन सा solution लेना है? किसी एसिड का, बेस का या सॉल्ट का, क्योंकि एसिड बेस एंड सॉल्ट कैन डिसोसिएट इनटू आयंस. हम यहाँ क्या ले रहे हैं? वाटर सॉल्यूशन ले रहे हैं. सो अगर हम प्योर वाटर लेते हैं, if we take pure H2, will that conduct, will that dissociate? No, because pure water does not dissociate into H plus and OH positive, hydrogen and oxygen. Pure water does not dissolve in H positive and OH negative because pure water is not dissociated. We need to add some acid or salt to this water so that it becomes conducting, so that it can dissociate. So हम water लिख रहे हैं. This is not pure water. Water with impurities. Okay. So this type of solution is known as electrolyte. Electrolyte is, what is an electrolyte? Electrolyte that conducts electricity. Okay. So this is your electrolyte. It conducts electricity. How does it conduct electricity? How can we pass electricity through this? We need to make a circuit. And circuit में क्या क्या होता है? You know what is inside electric circuit? Battery होती है, wire होता है, switch होता है, bulb होता है. That's all. So we take a battery. Okay, this is a battery. Now, how can we connect? Can we directly pass them through water? No, we need some metal because metals also conduct electricity. We need metal rods. Okay. These are any metal rods and we connect this battery to like this. Now see, this circuit is complete. Okay, you can also take carbon rods here, not necessarily metal rods. You can also take carbon rods. So this circuit is complete. Electricity is passed. जब भी बैटरी लगाएंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कहां से कहां तक? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. That's how electricity is passed. So what is happening? Tell me, in this battery, जो मैंने बैटरी बनाई है अभी, इसमें कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? You know that जो बड़ी लाइन होती है, bigger line is positive and smaller line is negative. So the electrode which is connected to the positive terminal also becomes positively charged, and the electrode that is connected to the negative terminal also becomes negatively charged. All right. Now this positive electrode is known as anode. क्या? Anode. Positively charged electrode is known as anode. This is electrolyte. This is electrode. That is battery. And negatively charged is known as cathode. Anode and cathode. All right. Now what's happening? Anode, cathode. Electricity passes from here to water. अब electricity यहाँ पर आ गई है, but then you write that reaction. कौन सी? H2O. Electricity breaks down
H2O into hydrogen and oxygen. So here water will be decomposed into hydrogen and oxygen. How? कैसे? क्या water सीधा ऐसे टूट जाएगा? नहीं. You know water first dissociates into ions. ठीक है? Ions में dissolve होगा. ठीक है? कौन कौन से ions? Hydrogen ions and oxygen ions. ठीक है? In this reaction, water dissociates into hydrogen and oxygen ions. All right. कैसे? H2O H positive plus O2 negative. All right. H positive plus O2 negative in this reaction. H positive plus O2 negative. All right. Balance this reaction. Hydrogen 2 है तो इधर 2 कर दो बस. ठीक है. So देखिए H2O breaks down H positive and O negative. यहाँ पर कौन से आयंस बन गए हैं? H positive बन गया है और O2 negative बन गया है. All right. Now you know that opposite charges attract each other. जो opposite charge होते हैं they attract each other. So हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव विल अट्रैक्ट टू द नेगेटिव. हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव आयन will go to the cathode because cathode is negative charge, and oxygen negative to negative ion will go to anode because anode is positive, oxygen is negative. In this way, hydrogen gas is released at cathode and oxygen gas is released at anode. All right. So that's how decomposition by electricity happens. That oxygen is released at anode because oxygen negative होता है, anode positive होता है. Hydrogen positive होता है, cathode negative होता है. So hydrogen is released at cathode. All right. So this is the basic setup for decomposition by electricity. अब इसको आप reactions में कैसे represent करेंगे देखिए. इसकी रिएक्शंस कैसे लिखते हैं? H2O breaks down into 2H positive plus O2 negative. Okay, 2H positive plus up this H positive ions will combine with electron to form hydrogen. Okay, 2H positive will combine with 2 electrons to form hydrogen. This positive ion will go to the cathode. और cathode पर क्या है? Electrons है. Electrons, negative charge. That's why it makes hydrogen. What will be at cathode? O2 negative. ठीक है? O2 negative से O2 कैसे बनेगी? ऑक्सीजन में O2 नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम करने हैं, तो हम रिएक्शन में माइनस तो नहीं कर सकते, तो हमें अपोजिट रिएक्शन लिखनी होगी. O2 how can we write this? Plus 2 in negative. You can write like this. O2 negative, O2 plus 2E negative. C. Now see carefully. क्या लिखा है? सबसे पहले water dissolves into hydrogen and oxygen ions. Hydrogen combines with electrons to form hydrogen gas. Oxygen ion releases 2 electrons to form oxygen gas. So that's how water dissociates. These 3 reactions, इन तीनों reactions का जो gist है वो क्या है? वो मैं इधर लिख रहा हूँ, जो कि आपने reaction पढ़ी थी. H2O 2H2 plus O2. This is the main reaction. आपको वो वाली रिएक्शन लिखनी है, अगर डिटेल में कोई पूछे तो ये सब आपको बताना है. ठीक है? Now see, in that reaction there is one question I am asking to you.
in that reaction, hydrogen, amount of hydrogen released at cathode is double the amount of hydrogen released at anode. ठीक है, amount of hydrogen released at cathode is double the amount of oxygen released at anode. ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन क्यों ज्यादा रिलीज होगी इधर ऑक्सीजन की कंपैरिजन में? ऑक्सीजन गैस का 1 मोल रिलीज होगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस का 2 मोल रिलीज होगा. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन. You have to write that reaction, and writing then, because the number of hydrogen gas moles is 2, so amount of hydrogen gas released is double than the oxygen. Okay, any doubt you can ask. Okay, no doubts. You can see that this again in that video. In this video, you can watch this video again and again. You can understand. So I am going to remove this. So you study decomposition. Displacement आप पढ़ चुके हो, डबल डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, रेडॉक्स भी पढ़ चुके हैं. वन लास्ट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं. आपको बताना है कौन सा इसमें स्पीशीज जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है. उससे पहले राइट डाउन एनी रेडॉक्स रिएक्शन, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन आप लिखिए. आप लिखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन. इसके बाद आई एम राइटिंग अनदर रिएक्शन. मैंगनीज क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मेक्स manganese chloride, sorry, this is oxygen, MnO2, manganese oxide plus hydrochloric acid, it makes MnCl2, manganese chloride, manganese oxide plus hydrochloric acid, manganese chloride plus chlorine gas and plus water. See, I am writing this reaction. Now you have to tell me, you need to tell me that which of the reactants is oxidized and which one is reduced. कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है. देखिए MnO2 के साथ क्या हुआ, MnO2 का O चला गया, अब Mn के साथ क्या है, क्लोरीन. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, सो MnO2 इज रिड्यूस्ड. नाउ HCl के साथ क्या हुआ, पहले Cl था, अब क्या ऐड हो गया, देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड है उधर, वाटर. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, सो दिस वन इज ऑक्सीडाइज्ड. ऑलराइट, MnO2 is reduced to MnCl2, HCl is oxidized to H2. Okay, you can balance this reaction. You can write here 4 HCl because there are 4 chlorines. Okay, and there you can write 2 H2 to make 4 hydrogens, and this reaction is balanced. Okay, right, HCl is oxidized. Now this reaction is NCRT. Last topic, देखिए, you have studied about oxidation. Okay, so oxidation is always good for bad or bad. See, oxidation से हमें क्या advantage है, oxidation से we can burn any substance. burning कैसे होती है, oxidation से. ठीक है, oxidation से ही हमें energy मिलती है. when glucose is oxidized, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है उसी से हमें एनर्जी मिलती है.
Okay, but are there any bad effects, harmful effects of oxidation? Yes, there are. What are those? See, when metals, कुछ metals आपने देखा होगा, कुछ metals की जो surface होती है that becomes tarnished, वो खराब हो जाती है, उस पे किसी पर जंग लग जाता है, जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, या कॉपर के वेसल पर भी धब्बे हो जाते हैं, ठीक है, सिल्वर की, चांदी भी काली हो जाती है, वो सब क्यों होता है? All that is due to reaction of that metal with moisture or any gas present in air. For example, iron. आयरन जब वाटर से, मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये रस्ट बनाता है, और रस्ट क्या होता है? जंग। जो लोहे को जंग लगता है, दैट इज हाउ, कैसे? आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, इट मेक्स रस्ट, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट। उस आयरन मेटल पर आयरन ऑक्साइड की लेयर लग जाती है, जिसको हम जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ओके, सो व्हेन मेटल्स कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर और एनी एयर प्रेजेंट इन द एयर, एनी गैस प्रेजेंट इन द एयर, then metals becomes corroded, metal becomes corroded, and that is known as corrosion. So what is corrosion? Corrosion is when metal comes in contact with moisture or gas in air, metal becomes corroded, that is corrosion. Okay, silver, जो सिल्वर होता है, उसपे जो सिल्वर जब चांदी काली हो जाती है, वो क्यों होती है? दैट इज ड्यू टू सल्फर। जो सल्फर गैस प्रेजेंट होती है, जो सल्फर होता है, ठीक है, दैट रिएक्ट्स विद सिल्वर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। ओके, Ag2S, silver sulfide. So that is also corrosion. Silver combines with sulfur present in air to form silver sulfide, and that gives black color to the silver. ठीक है, जो कॉपर होता है आपका, कॉपर, कॉपर पर किसकी लेयर बनती है? आयरन पर ऑक्साइड की, सिल्वर पर सल्फाइड की, कॉपर पर कार्बोनेट की और हाइड्रोक्साइड। जो कॉपर होता है वो किससे रिएक्ट करता है? वाटर से और CO2 से, में कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। So you have to basically remember what is corrosion. Corrosion की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और रस्ट का फॉर्मूला आप याद रखिए। सिल्वर सल्फाइड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और कॉपर पर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की लेयर बनती है। So oxidation is harmful for some metals and also food. जब फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका, कोई भी फैट या ऑयल है, किसी भी फूड में आपका फैट है, ऑयल है, या कोई घी है, मक्खन है, when they get oxidized, उनमें से स्मेल आने लगती है, खराब हो जाते हैं। That is also due to oxidation. So when food is oxidized, it becomes rancid. Rancid हो जाता है मतलब spoil हो जाता है, and it causes bad smell. That is known as rancidity of oil. What is rancidity? When oil or fat become oxidized, they become rancid. Okay, so you could see there were a lot of important concepts in this chapter. Now you have to revise all of them from NCERT and notes and prepare this chapter very well. Okay, thank you.